देखिए, हम लोगों ने अपना जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। अब जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पहला है वो 12 मार्क्स का आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। मून इंडिया लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। किसमें एंगेज है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर एंगेज है मून इंडिया लिमिटेड। फर्निशेज द फॉलोइंग डिटेल्स, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50 लाख है। कंपनी took a loan of 12 lakhs in financial year 16-17 for relocation of its office premises. The lender waived 8 lakh rupees in financial year 19-20 and the same has been what credited to profit and loss account. अब ये जो आपन ने लोन लिया ये आपको किसके लिए लिया गया है? अपनी ऑफिस प्रीमाइस को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए लिया गया है। तो इट इज नॉट अ ट्रेडिंग लायबिलिटी, इट इज बेसिकली नॉट अ ट्रेडिंग लायबिलिटी। तो अब यहां ने लेंडर ने वेव कर दिया ये लोन, तो ये एक तरह से आपके क्या है? कैपिटल रिसीट्स रहेगी। द सेम विल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41(1). अगर ये लोन ट्रेडिंग लायबिलिटी के रिलेशन में होता तो उस केस के अंदर इसकी टैक्सेबिलिटी 41(1) के अंदर क्या हो जाती? अराइज हो जाती। तो एक एक पॉइंट का अपन क्या है डिस्कशन करेंगे। तो पहला देखिए, अपने नेट प्रॉफिट एज पर 50 लाख रुपए। अब यहाँ पे क्या है, अपन ने ये जो लोन का टैक्सेशन है उसके अंदर अपन ने इसको क्रेडिट कर लिया, पर ये इनकम चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। तो जो वेवर ऑफ लोन है, वेवर ऑफ लोन फॉर रिलोकेशन ऑफ ऑफिस प्रीमाइसेस को रिड्यूस कर दिया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग आवर इनकम। ठीक है, इनकम को कंप्यूट करने के लिए, क्योंकि क्या है ये एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट है के लिए लोन लिया गया था। तो जो वेवर ऑफ और रेमिशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी होती है तो क्या है, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41(1) अट्रैक्ट होते हैं। यहां पे चूंकि ये ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है इसलिए ये इनकम का पार्ट नहीं बन सकती, 41(1) अट्रैक्ट नहीं होगा। आधा मार्क्स तो ऊपर के एडजस्टमेंट के हो गए और आधे मार्क्स इसके रिलेशन में हो गए। देखिए अब दूसरा देखिए, द डेप्रिसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16 लाख रुपए है। डेप्रिसिएशन एज पर P&L अकाउंट 16 लाख है। इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन 28 लाख आ रहा है। तो जो भी आपके डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट वो एड बैक हो जाएगा। इनकम टैक्स में जो अलावेबल डेप्रिसिएशन है वो लेस हो जाएगा। अब डेप्रिसिएशन रेट मेंट फॉर कंप्यूटर्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर S3 लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। इस पे तो 40% की रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। EPBX क्या होता है, उस पे आपके इट इज नॉट अ कंप्यूटर, सो इस पे एडमिजिबल डेप्रिसिएशन क्या है, 15% की रेट से लगेगा। और जो WDV आ रही है EPBX की वो आ रही है कितनी? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए पे आपने 40% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, यानी 80,000 रुपए। पर एडमिजिबल डेप्रिसिएशन आपका 2 लाख पे कितना था? 15% ही था। तो आपके क्या हो गया? 30,000 ही एडमिजिबल था। तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर लिया आपने? 50,000। तो इनकम टैक्स में अलावेबल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 28 लाख माइनस 50,000, यानी 27 लाख और 50,000 रुपए आपका क्या है? एडमिजिबल डेप्रिसिएशन होगा। सिंस वी हैव चार्ज एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन अंडर as per the provisions of the income tax under section 32, so allowable depreciation will be reduced. So here 16 lakhs, the same will be added back. And what is the allowable depreciation? 27,50,000, the same will be what? Reduced. ये reduce कर दिया जाएगा। Computers and peripherals like printers and scanners, they form an integral part of the computer system, and the same cannot be here they cannot be used without the computer. Therefore, they are eligible for depreciation at rate of 40%. However, EPBX is not a computer, therefore they are not entitled to higher depreciation of 40%. So we have made this adjustment. So 1 mark has been allotted for the said adjustment. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज incurred 2,50,000 as expenditure for public issue of shares. The public issue could not materialize on account of non-clearance by the SEBI and the amount has been charged to profit and loss account. So whatever amount of 2,50,000 rupees जो मैंने एक्सपेंडिचर इनकर किया है ये कैपिटल इन नेचर होगा और इसको वापस से क्या है अपने को एड बैक करना पड़ेगा। ये आपके दे रखा है, मैस्कन टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड का केस हुआ है। शेयर इशू एक्सपेंसेस वुड बी कंसिडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर इवन व्हेन द शेयर्स कुड नॉट बी इशूड ड्यू टू नॉन अप्रूवल ऑफ सेबी। चूंकि अपन ने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज कर रखा है
इसलिए इसको वापस से क्या किया जाएगा, द सेम विल बी व्हाट, एडेड बैक सिंस इट हैज बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर अपन ने इनकर किया इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. दिस अमाउंट हैज बीन व्हाट, कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो जो डिबेंचर इशू के एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, अलाउेबल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू इन नेचर है. द सेम विल बी व्हाट, अलाउड एज डिडक्शन. तो वॉट एवर एक्सपेंडिचर has been incurred on issue of debentures only and exclusively for the purpose of assessee's business and is also not capital in nature, therefore it will be allowable as deduction. तो अब यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर अपन ने आपने डेबिट मतलब किया हुआ है, जो डेबिट नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखिए, कंपनी हैज पेड 1 लाख रुपीज एज कंपाउंडिंग फीस फॉर वायलेशन in the pollution control regulations. The same has been what, charged to the revenue expenditure. So अगर आपने violate किया तो it is in nature of it's not a compensatory penalty, it is in nature of offense. और जो भी compounding fees आपने pay की है for violating, it is a offense. It is penal in nature. अगर penalty penal in nature होगी तो उसको क्या है, add back किया जाएगा. इट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37(1). फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, द कंपनी हैज लॉस्ट कैश ऑफ 25 लाख ड्यू टू theft when it was withdrawn from the bank and was taken to the administrative office. It is not insured and fully charged to revenue. So it's a loss has occurred during the course of business. Embezzlement is there, or say theft is there, that is allowed as deduction. So here, since the same has already been debited to the profit and loss account, it has been debited to the profit and loss account, hence no adjustments will be needed in such a case. Next is rupees 5 lakh was spent towards the permitted CSR activities as per section 135 of the Companies Act. So you are aware of the fact that whatever expenditure has been incurred on CSR, the same is what, specifically disallowed. However, the company can claim deduction under section 80 GGB. Then here 2 lakh has been paid to a share broker for transacting shares listed in recognized stock exchange, and 1 lakh is paid to commodity broker for commodity transactions at MCX. So share, in case of share broking transactions, there is no requirement of tax deduction at source. But in case of commodity broking transactions, there is a requirement of tax deduction at source. Refer section 194H, where they have defined the commission and brokerage. So here, 30% of the expenditure so incurred will be disallowed. Payment to share broker without TDS, the same is allowed. Payment to commodity broker without deducting tax at source, so 1 lakh, 30% of the amount will be disallowed under section 40 clause A, subclause 1A. Then they say that 50,000 has been paid to an electoral trust by cash and 1 lakh to a political party. So whatever amount of donations have been paid, the same will be added back, though they are eligible as deduction, but cash donations to electoral trust will not be allowed as deduction. Now here we are required to compute what? The gross total income. So we are required to compute the GTI. So these adjustments are made, and resultant sum is 38,80,000 rupees is a gross total income. So this way you have to write the working notes also. These working notes are very, very important. Here say we are saying whatever commission is paid to a share broker for transaction securities has been excluded from the purview of section 194H, whereas for commodity broker it is covered. Therefore commodity broker, if payment is made without deducting tax at source, 30% of the same will be disallowed. So this way we have discussed our second question, which is a comprehensive question. These questions, they are also certain examination, past exam questions, certain new questions have been framed, which you have to do. And these questions are, we have comprehensive questions, are all past exam questions. They are covered in our compiler also. Separate compiler is released covering all the past exam questions. Now, next question which we'll be discussing is our 3A. It was 8 marks question. Question number 3A, it is 8 marks question here. SS Private Limited is a domestic company, domestic Indian company,
It is having two undertakings. It is having what? Two undertakings. Here, engaged in manufacture of cement and steel, it decided to hive off the cement division to RV Private Limited, a domestic Indian company, by way of demerger. So the question relates to demerger aspects. The net book value of the assets of SS Private Limited before demerger is 40 crores. The net book value of assets transferred to RV Private Limited is of 10 crores. The demerger was made in January 2020, and in scheme of demerger, it was fixed that each equity share of 10 each, fully paid up by SS Private Limited, 2 shares will be issued here. For 1 equity share, 2 shares will be issued in consequence of demerger. Now here, one Mr. NK held 25,000 shares in SS Private Limited, which were acquired in the financial year for 6 lakhs. Therefore, he has received 50,000 equity shares, and he has sold those shares for 8 lakh rupees. Now here the cost, what will be the cost of the shares? He has acquired these shares for 6 lakhs in the demerged company. What is the net book value of the assets which have been transferred to the resulting company is 10 crores. And what is the net worth before demerger? That is 49(2)(c) provides for the same. These will be the cost of acquisition of shares of resulting company. 50,000 rupees will be the cost of shares of resulting company. Now, they are asking, does the transaction of demerger attract any income tax liability in the hands of SS Private Limited and RV Private Limited? So, in case if any capital assets are transferred in a scheme of demerger fulfilling the conditions of the demerger which has been provided, then in that particular circumstance, the same is not regarded as transfer. So when the transaction is not regarded as transfer, taxability will not arise in hands of SS Private Limited, as well as what? In hands of RV Private Limited, no taxability will arise. Now what are the conditions which are required to be fulfilled? They are asking for the second one. So basically all the properties of the undertaking which are being transferred by demerged company immediately before demerger, they will become the property of the undertakings of the resulting company. All the liabilities of the demerged company before demerger becomes the liabilities becomes of the resulting company which has been transferred. And the properties and the liabilities of the undertakings or undertakings which are transferred by the demerged company, they are transferred at the same values which are appearing in the accounts immediately before the demerger. Then the resulting company issues in consideration of demerger the shares to the shareholders of the demerged company proportionate on proportionate basis, except where the resulting company itself is the shareholder of the demerged company. And shareholders holding not less than what? 75% in the value of the shares of the demerged company becomes the shareholders of the resulting company. And transfer is on going concern basis, and demerger in accordance with the conditions which have been fulfilled under section 72A5. So these conditions are required to be fulfilled. So you have to write these conditions. These conditions are required to be fulfilled here. Then what is the next question is, compute the capital gains that would arise in hands of NK on receipt of the shares of what? RV Private Limited. So when he receives the shares of RV Private Limited, if any, no capital gains will arise in his hands, since the transaction is not regarded as transfer. So here, according to section 47 clause 7D, any transfer is issue of shares by a resulting company in a scheme of demerger to whom a shareholder of the demerged company, the same will not be regarded as transfer. Therefore, no capital gains will arise in his hands. Then what they say is, here, further they are saying, compute capital gains on sale of shares. On sale of shares. Now he has sold the shares for 8 lakh rupees. So full value of consideration will be what? 8 lakh rupees. And we'll be finding out the index cost section. Since he has acquired the shares of demerged company prior to demerger for 6 lakhs, 10 lakh is the book value of the assets which have been transferred to the resulting company. 40 lakh was the net worth of demerged company before demerger into 289 divided by the cost inflation index in which the shares
have been acquired by him of the demerged company. That is the cost inflation index of 2002-3. There the cost to the previous owner will become what? Cost to the this in case of demerger. We have to make proportionate, and whatever period of holding of shares of demerged company, the same is included in what? The period of holding of shares of the resulting company. This cost is made proportionate and this period is included. Therefore, indexation will be done by this. So this will be the long-term capital gains. Then further they say that if will sale of shares by NK affect the tax liability of availed by SS Private Limited or RV Private Limited? Here this sale will not affect the tax liability of SS Private Limited or say RV Private Limited. And further they are asking, is Mr. NK eligible to avail tax exemption under any of the provisions of the Income Tax Act 1961 on sale of shares of RV Private Limited? If so, state in brief. So he can get the benefit of exemption under section 54 EE, or he can get the benefit of exemption under section 54F. In case if any long-term capital asset has been transferred and we have acquired the units of a specified fund, we can get the benefit of exemption under section 54 EE. And in case if this long-term capital asset has been transferred and we acquire the new residential house, the net consideration invested for acquisition of new residential house, we get the benefit of exemption of section 54F. So this was one question which was dealing with the demerger aspects. Now next question is, Mr. X has 3 houses, all of which are self-occupied. The particulars they have provided, and we are required to compute the income from house property. Now 2 houses can be treated as self-occupied, and 1 house will be regarded as what? Deemed to be let out. We have to make an option. We have to make an option that where the option 1, say house 1, S2, house 2 self-occupied, then house 3 say deemed to be let out. These types of options we have to create. Say house option 2 say house 1 and house 3 are self-occupied, then house 2 will be deemed to be let out. House 2 and house 3 self-occupied, house 1 will be deemed to be let out. First of all, we will be computing the income from deemed to be let out property here. So this is a municipal value, this is fair rent, this is standard rent. The expected rent is municipal value or fair rent which is higher, subject to maximum standard rent. Here it comes out to be 1 lakh rupees. Here it comes out to be 1,65,000 rupees. Here it comes out to be what? 2,40,000 rupees. Municipal value or fair rent which is higher. This is the expected rent. Whatever municipal taxes have been paid, the same will be what? Reduced. Whatever municipal taxes have been paid, the same is reduced. So they say that municipal taxes payable during the year paid for house 2 and 3 only. So only for house 2 and 3, the same will be reduced. Municipal taxes are allowed as deduction on actual payment basis. Then we'll be getting the statutory deduction and interest on loans. So this is what income from deemed to be let out property in all the 3 cases. Then we have, self-occupied. Annual value of house 1 and 2 will be nil, and the maximum amount on account of interest on borrowed capital will be what? 2 lakh rupees in aggregate for both the houses. It will not be individually, but in aggregate for both the houses, it will be 2 lakh rupees. So house 1 and 2 annual value is nil if case they are self-occupied, and you get a deduction on account of interest on borrowed capital 2 lakh rupees. Similarly for house 1 and 3 and house 2 and 3, we will be getting the amount of deduction on account of interest on borrowed capital. Then we will be putting the same in the option, and whatever the lowest value, the same will be offered for taxation. So here the lowest value is 2,65,000 rupees, in which house 2 and 3 are what treated as self-occupied and house 1 is deemed to be let out. Therefore, our answer will be what? 2,65,000, loss of 2,65,000. The same will be offered for taxation. This amendment has been made. Now we can take the benefit of 2 self-occupied houses. Benefit of 2 self-occupied, as 2 houses can be treated as what? Self-occupied here. Now next question is regarding the capital gains here. Says consideration 2 persons are there. He has sold the house for 2 crore and 30 lakh rupees. Stamp duty value is
2 crore and 50 lakh rupees. So we will compare 105% of the consideration. If the SDV exceeds 105% of the consideration, here stamp duty value exceeds 105% of the consideration. Therefore, 2 crore 50 lakh rupees will be what? The full value of consideration. In this case, it does not exceed what? In case of Mr. Y, so here 9 crore 40 lakh rupees will be taken as the full value of consideration. Whatever expenses are incurred in connection with the transfer, the same are reduced here. 40,000 rupees and 50,000 rupees are reduced. We get the indexed cost of acquisition. Here cost action is 8 lakh rupees and fair market value is 9 lakh rupees. Here cost action is 1 crore 60 lakh rupees. Fair market value is 2 crore 30 lakh rupees. So we'll do the indexed cost action in both the cases. Whatever improvement expenditures have been incurred, the same will also be what? Indexed cost of improvement. Then the resultant sum is capital gains. Now the question was based on this, where our long-term capital gains exceeds 2 crore rupees. Only one house. Exemption for purchase of one house can be claimed here. So here his long-term capital gains exceeds 2 crore rupees. Though he has purchased two houses, but he will get the benefit of only one house here. In second case, since his long-term capital gains does not exceed 1 crore rupees, 2 crore rupees, in that case he will get the benefit of both the houses. But the amount of exemption cannot exceed what? The amount of the long-term capital gains. So this was a question, a simple question, which are these two questions. Both the questions were based on amendments which have been made by the Finance Act 2019, number 2 Act 2019, which are applicable for assessment year 2021. Now the next question is about computation of taxable income from other sources. Now say Mr. A is a dealer in shares, received the following without consideration during the previous year 1920 from his friend B. He has received a cash gift of 75,000 on his anniversary. We are required to compute income from other sources. So cash gift received on marriage is exempt, but on marriage anniversary is not exempt. So cash gift received on anniversary will be taxable since it exceeds rupees 50,000. He has received a bullion, the fair market value of which is 60,000 rupees. Though he is a dealer in shares, he has received a bullion. Bullion comes under the ambit of property on his birthday, on 19 June 2019. So whatever bullion is received exceeding 50,000 rupees, the same will be what? Taxable. Then he has purchased a plot of land at Faridabad on 1st June 19. Stamp duty value is 5 lakh rupees on the date. Mr. B has purchased the same in April 2009. Mr. A has purchased from his friend a plot of land at Faridabad on 1st July 2019. The stamp duty value is received the same as gift. So whatever plot of land is been received as gift, the stamp duty value on the date of the transfer, that is what regarded as the income from other sources. So this plot has been received without consideration here. Now Mr. A purchased from his friend C, who is also dealer in shares. He is also dealer in shares, 1,000 shares of X Limited of 400 each on 19 June 2019. The fair market value of which is 600 as on that date. Mr. A sold these shares in course of his business. So now these shares, they are acquired by Mr. A as stock in trade. Since the same is not a capital asset, it is not capital asset, in hands of Mr. A. Since it is not a capital asset in hands of Mr. A, hence it will not be taxable as income from other sources under section 56(2)(10). It won't be taxable as income from other sources under section 56(2)(10). चूंकि डीलर है ये और डीलर ने स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में लिए इन शेयर्स को, इसलिए टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी. फिर 1 नवंबर 2019 को A टू का पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग बुक्ड बाय हिम 2 years बैक फॉर 20 लाख.
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 1 नवंबर 19 वॉज 32 लाख एंड डेट ऑन द डेट ऑफ बुकिंग 23 लाख. ही हैज पेड 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक ऑन द डेट ऑफ बुकिंग. तो डेट ऑफ बुकिंग के हिसाब से देखेंगे अपन. डेट ऑफ बुकिंग पे चूंकि इसने अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट किया था, 20 लाख रुपए पे किए थे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख थी, इसलिए जो डिफरेंस है 105% ऑफ कंसिडरेशन से एक्सीड कर रहा है, इसलिए जो 3 लाख रुपए है ये इसकी क्या मान ली जाएगी, परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मान ली जाएगी. 5% ऑफ द कंसिडरेशन और 50,000 से ज्यादा ये डिफरेंस है. उसके अलावा ये पूछ रहे हैं ए के एंड में तो अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स की इनकम भी ये पूछ रहे हैं. अब इसने क्या किया, इस प्लॉट को बेच दिया 7 लाख रुपए के अंदर, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा. फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 7 लाख हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ एक्शन क्या होगी इस केस के अंदर, जो भी आपके स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 5 लाख रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 लाख थी, वो उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट एक्शन बन जाएगी. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ये, और यहां पे ये टैक्सेबिलिटी इस तरह से अराइज होगी. तो एक अदर सोर्सेज का एक क्वेश्चन अभी अपन ने क्या है डिस्कस किया. इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर अदर सोर्सेज के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आते हैं. अब देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 5A है, वो क्लबिंग ऑफ प्रोविजन से रिलेटेड है. क्लबिंग ऑफ इनकम के जो प्रोविजंस हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम के जो प्रोविजंस हैं उनसे रिलेटेड. रयान गिफ्टेड 15 lakhs टू हिज वाइफ. रयान ने 15 लाख रुपए अपनी वाइफ को दिए, सरगम है उसकी वाइफ का नाम, ऑन हर बर्थडे ऑन 23 फरवरी 2019. तो ये गिफ्ट मिली है सरगम को, ये एग्जेम्प्ट रहेगी, रिलेटिव से मिल रही है, इसलिए अंडर सेक्शन 56(2)(10) ये टैक्सेबल नहीं हुई. सरगम लैंड 8 लाख आउट ऑफ इस गिफ्टेड अमाउंट टू करुणा. 1 अप्रैल 19 को 6 महीने के लिए इसने दे दिया, और उस पर 80,000 रुपए इंटरेस्ट हुआ. तो जो 80,000 रुपए इंटरेस्ट मिला है, ये तो क्या हो जाएगा, रयान के एंड्स में ये क्लब हो जाएगा. द सेड सम ऑफ 80,000 इन्वेस्ट कर दिया गया इन शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी विच वर सोल्ड फॉर 96,000 रुपीज. तो 96,000 रुपए 96,000 रुपीज और 80,000 रुपए का जो डिफरेंस है, ये 16,000 रुपए क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है. पर ये एक तरह से एक्रीशन इन इनकम है. ये क्या है, एक्रीशन इन इनकम है, और एक्रीशन इन इनकम में क्लबिंग इज नॉट अट्रैक्टेड. एक्रीशन इनकम में क्लबिंग नहीं होती है. तो ये 16,000 रुपए तो क्या है, किसकी इनकम मानी जाएगी, ये 16,000 रुपए उसकी वाइफ सरगम की इनकम मानी जाएगी. ये सरगम की इनकम मानी जाएगी, ठीक है. और बैलेंस अमाउंट ऑफ गिफ्ट वॉज इन्वेस्टेड इन 19 एज कैपिटल बाय सरगम इन अर बिजनेस, और 52,000 का लॉस हुआ. तो यहां पे जो क्लबिंग होती है उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है क्या, कि इनकम में इंक्लूड्स लॉस ऑल्सो, इनकम इंक्लूड्स लॉस. तो ये जो 52,000 रुपए का नुकसान है, लॉस, वो भी क्लब होगा, वो भी क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा इन हैंड्स ऑफ रयान. ठीक है. तो ये अभी इसके टैक्स ट्रीटमेंट के क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस से डील कर रहा है. अब देखिए एक और क्वेश्चन. Polomi, a chartered accountant, is presently working a firm in India. She has received an offer as a CFO for a company at Singapore. As per her offer letter, she should join the company in between these dates. And she approaches you for your advice on the following issues to mitigate her tax liability. कि किस कम से कम मेरी टैक्स लाइबिलिटी कैसे रहे. Date by which the company she should leave India, या she should join the company there. तो अब ये देखिए, जो अगर कोई रेजिडेंट है वो कब होता है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो तब रेजिडेंट हो जाता है अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत के बाहर जा रहा हो. इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ही विल बी रिगार्डेड एज रेजिडेंट इन इंडिया विद इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर.
तो अगर वो 182 दिन या उससे ज्यादा रहती है भारत में, इफ शी लिव्स इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days और मोर, her entire global income will be taxable. So she should plan her affairs in such a manner that she should leave India prior to what her stay in India for 182 days. तो जो 181वें दिन वो आप भारत छोड़ के चली जाए, तो ये उसका मतलब ये है कि she should leave India on or before 28th of September 2019 so that her global income is not taxable, because in case of a resident global income is taxable. तो ये जिससे कि वो नॉन रेजिडेंट रहे, जिससे कि सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स लगे. दूसरा ये पूछ रहे हैं कि क्या डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पार्ट ऑफ आवर सैलरी टू आवर बैंक अकाउंट इन कोलकाता मेंटेन्ड जॉइंटली विद आवर मदर टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर फैमिली. अगर कोई इनकम क्या होती है इंडिया में रिसीव हो जाती है तो इट विल बी टैक्सेबल whether a person is a resident or NR. तो अब ये ध्यान रखें, हम रिसीट करेंगे इंडिया में तो रिसिप्ट ऑफ इनकम इज टैक्सेबल, भले ही से ये NR रहे तो रिसिप्ट ऑफ इनकम इज टैक्सेबल, रेमिटेंस इज नॉट टैक्सेबल. तो इन केस she credit her income say in Singapore and subsequently remit the same to India, and subsequently what? Remit the same to India, it will not be taxable. So this must be kept in mind. When she is a non-resident, she must not receive this income in India. Then the next question is what? Period for which she should stay in India when she comes to India. So in case of an Indian citizen who comes to India for the purpose of visit to India, then she will be regarded as a resident if she is in India for a period of 182 days or more. Therefore, if she comes to India subsequently, she should not come here in this particular financial year, but whenever she comes to India subsequently for purpose of visit to India, she should not be in India for a period of or more than say 182 days or more. She should be in India for a period of stay for less than say 182 days. Then only she will be regarded as non-resident, so that her, if she is a resident, then her global income is taxable. To escape that, she must be a non-resident. She should not be in India for a period of 182 days or more on her subsequent visits. So this was one question which we have discussed about the residential status and the effect of tax incidence on the same. Now one more question is there. Avimanyu is a resident individual, held 25% equity shares in FMC Limited, an Indian company. The company paid on 31st March 2019, paid up share capital was 10 lakhs, divided into 1 lakh equity shares of 10 each. They have been issued at a premium of 20 each. The shares were allotted on October 11. The fair market value was 40 per share. Now the company had gone for buyback of shares, 30% of the shares. They have gone for buyback of 30% of the shares. So here they have gone for buyback of what? 30% of the shares. $30,000 shares have been bought back. And company has paid 60 lakh rupees, 60 per share. This amount has been paid. Explain the tax effect in hands of FMC Limited and Avimanyu Limited. If the shares are listed or shares are not listed. Now it will not make a distinction in case the shares are listed or if the shares are say not listed. Whatever buyback amount is received by a shareholder, whether it's a listed or whether it's a unlisted, the amount would be what? Exempt from tax. So the same will be what? Exempt from tax in the hands of the shareholder. And company will be liable to pay tax under section 115 QA at rate of 20% plus surcharge plus HEC. So effective rate is 23.296%. The company will be liable to pay the tax on the same. So here how much amount has been paid on buyback?
they have purchased 30,000 shares buyback, they have paid 18 lakh rupees on buyback. How much amount has been received by them on buyback? They have issued the shares at 20 rupees at a premium, so they have received rupees 30 per share. So this has been amount which has been received on buyback. 9 lakh rupees is the distributed income. The company will be liable to pay tax amounting rupees 2,09,664, and in hands of the shareholder, whether it's a listed or unlisted company, the amount is say exempt, and whether it's a listed or unlisted company, company will be liable to pay tax on the distributed income. Whatever the difference between the amount which has been received on buyback and whatever amount has been given on buyback to the shareholders. Now one question was there, Mr. X is a member of a legislative assembly. He underwent an open heart surgery abroad in respect of which he received rupees 5 lakh from state government towards the reimbursement of the medical expenses. AO wants to tax the same as perquisite. So we have discussed in our salary chapter that MLA and MPs are not government employees. They are not the government employees. वो government employee नहीं होते हैं, but are elected representatives. But are what? Elected representative. तो जो भी सैलरी मिलती है उनको, वो क्या होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है. तो यहाँ पे एओ का कंटेंशन ये कहना कि ये परक्विजिट है और सैलरी एड में टैक्सेबल होगा, ये सही नहीं है. ये सैलरी एड के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा. तो कंटेंशन ऑफ एओ इज नॉट करेक्ट इन दिस केस. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. मिस्टर भार्गवा एक लीडिंग एडवोकेट है कॉर्पोरेट लॉ में. डिसाइडेड टू रिड्यूस हिज प्रैक्टिस एंड टू एक्सेप्ट ब्रीफ्स ओनली फॉर पेइंग टैक्सेस एंड मेकिंग चैरिटीज विद द फीस रिसीव्ड ऑन सच ब्रीफ. भार्गवा एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे. अब उन्होंने कहा प्रैक्टिस कम कर दी और बोला हम ब्रीफ अपीयरेंसेस करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में. और उन्होंने 5 लाख रुपए एक कंपनी से मिले, उनको डिफेंड किया कंपनी से केस, और कि भाई ये 5 लाख रुपए उनके दिए जाएं जिससे कि वो एक ट्रस्ट बनाएंगे. ही विल क्रिएट अ प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट. और उसने क्रिएट की वो ट्रस्ट, और ये कह रहा है भार्गव साहब कि भाई हमारे जो ये इनकम है ये टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए प्रोफेशन की इनकम में. अब यहाँ पे जो इनकम है, यहाँ पे जो इनकम है ये उसकी क्या है? प्रोफेशनल इनकम. हियर obligation is created by the recipient. It is not an obligation. ये कोई obligation नहीं है on source of income. ये कोई source of income पे obligation नहीं है. It cannot be regarded as diversion of income. It cannot be regarded as what? Diversion of income नहीं माना जा सकता. यहाँ obligation is on the receipt of the income. Income here reaches to the assessee. Income जो reach कर रही है as his own income. As his own income. ठीक है ना? तो ये इनकम उसकी क्या होगी? टैक्सेबल होगी. ये कह नहीं सकता कि भाई ये इनकम मेरे एंड में टैक्सेबल नहीं हो कि मैंने ट्रस्ट बना दी है. अगर ये कहता है ऐसे कि मैंने ट्रस्ट बना दी है तो ये बात अलग है. ये कह देता कि भाई मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, आपको जो भी दान देना है किसी भी ट्रस्ट में दान दे दीजिए, तब इसका कोई राइट ही नहीं रहता उस इनकम पे. और जब राइट ही नहीं रहता तो कोई इनकम उसके एंड में क्या है? टैक्सेबल नहीं होती. तो ये देखिए वी हैव डिस्कस्ड आवर फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर. इस तरह से हम लोग कैसे इस चैप्टर 1 से लेके जो 8 तक चैप्टर अपन ने क्लबिंग तक के चैप्टर्स हैं इसके रिलेशन में ये मॉक टेस्ट पेपर अपन ने डिस्कस किया है. आप लोगों को जिन्होंने क्वेश्चंस के आंसर अभी नहीं लिखे हैं उनको रिक्वेस्ट है कि उनको जल्दी से भेजें, जिससे कि अपन उनको इवेल्युएट करके हम लोग आपको जो जो आपकी कमियां हैं वो बताएं. और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आप अच्छी से आप मॉक टेस्ट पेपर जो मैं ये एमसीक्यूज आए उसके लिए अलग से पोर्टल है, वहां आप एडिशनल एमसीक्यूज भी आप आराम से कर सकते हैं. पेपर ये रहेगा चैप्टर 1 से 8 हो गया है. इस तरह से अपन 4 अपने अलग अलग पेपर्स होंगे. एक लास्ट पेपर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है,
जिसमें आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स पूरा चैप्टर 1 से लेके जो पूरे इंटरनेशनल टैक्सेशन तक का पूरा 100 मार्क्स का पेपर है। बेसिकली पेपर कराने का इंटेंशन क्या है और आपको लिखने का ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपकी राइटिंग एबिलिटीज बहुत इंप्रूव होती है और आपको किस तरह से एग्जाम में इसको प्रेजेंट करना है इससे पता चलता है। ठीक है, तो आपके वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे वर्किंग नोट्स को आपको क्या है अच्छी से लिखना है, क्योंकि वर्किंग नोट्स में जैसे अपन ने मार्क्स अलोकेट किए यहाँ पे वैसे ही वहां भी मार्क्स अलोकेट होते हैं। तो वर्किंग नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आपको अच्छे से करना है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम में अपियर हो रहे हो चाहे हिंदी मीडियम में अपियर हो रहे हो, उससे कोई वो कोई बात नहीं है। सेक्शंस अगर नंबर के कोटेशन सेक्शन नंबर कोट करने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, आता हो तो कीजिए, नहीं आता हो तो गलत मत कीजिए। बेसिक चीज ये है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के पेपर्स आप लिख के भेजेंगे, हम इवेल्युएट करके आपको वापस भेजेंगे, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी और आप अच्छी से एग्जाम में फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करेंगे। तो ये तो अभी अपना डायरेक्ट टैक्सेस का है। अब नेक्स्ट जो अपना मॉक टेस्ट पेपर कल शेड्यूल्ड है वो है इनडायरेक्ट टैक्स पे लॉज का, जीएसटी के रिलेशन में आईटीसी तक का। उसको भी क्या है इसी तरह से हम लोग क्या है लिख के आपको भेजना है प्रॉपरली, स्कैन्ड कॉपी आपकी आ जाएगी और फिर हम उसको इवेल्युएट करके वापस से आपको सबमिट कर देंगे। ठीक है, इसकी डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं कि कहाँ मॉक टेस्ट पेपर है तो आप www.adyas.com पे जाके देख सकते हैं, bangargdu.com पे भी ये अवेलेबल है। तो दीज आर व्हाट दी टेस्ट सीरीज जो हमने कंडक्ट करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ही क्या है इससे बेनिफिट मिलता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दे पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स, फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू वेरी मच।